हाइड्रेशन यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर. मैंने पानी पी लिया है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लिटिल टॉक. सो टुडे आई एम गोना डू अ समर ग्लैम लुक. हाँ जी, एंड मुंह धोया है कि नहीं पता, बट फिर भी लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बाल बांध लेती हूँ ताकि मेरे चेहरे में ना आ जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए. ओके, सो आई एम स्टिल डाउटिंग, बट कोई ना, लेट्स स्टार्ट करते हैं. फिजिक्स कैनेडा से पीचेस एंड क्रीम tinted moisturizer ... This is how I use my or apply my moisturizer every day. Blending with my fingers. Yes. Okay, मल लेती हूँ पूरी तरह से. Fast forward so that it can be easy for both of us. ओके, अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है बट इतने में से नहीं होने वाला. सो आई एम गोना यूज़ दिस कंसीलर फ्रॉम Maybelline टू हाइड ऑल ऑफ माई डार्क सर्कल्स एंड डिफेक्ट्स. बट हाउएवर आई हैव सीन वन ट्रिक इन रील्स और TikTok for snatch look. So I'm gonna try this right now. And yes, let's do this again. But this time I'm not gonna blend with my fingers. I'm gonna use Beauty Blender for this one. And trying to do the snatched look. देखते हैं कि होता है या नहीं. However, I'm gonna give my best. Like I'm giving here. हाथ दुख रहा है पूरा. आप लोगों को पता ही होगा कितना दर्द रहता है after blending on your face. Yes, दिख रही हूँ ना पूरी तरह से Kardashian. Okay, I'm gonna use L'Oreal Brow Artist. Oops, मेरा makeup. Okay, so using the gel as well as powder in the palette for fuller and thicker brows, which I don't have actually में. That's how I do it on a daily basis. But naturally तो natural वाला look ही करती हूँ. But for this one I'm doing a little bit thicker. इतने से नहीं होने वाला फिर से. I'm gonna use this ELF का brow gel so that अभी का जो trend है ना पूरी brow के बालों को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए. So I'm gonna pushing them. Like I'm gonna push them upwards इस तरह से. Yes, that's how you're gonna do it. You have to do it. ब्राउ जेल का काम यही है कि पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुश करना. Done. Now अभी आता है बजट का समय. I'm gonna use this brown nudish color lipstick on my eyelid for that deep and dark and that natural look and glow for my eyelid as well. इस तरह से ब्लेंड करेंगे दोनों ही आँखों में. हाँ, yes. इससे नहीं होने वाला तो I'm gonna use this two color, mix it up, little maroon and brown colors, and apply it on my eyelid, a little bit darker on my crease, and giving that little brownish look on my eyes. Now I'm gonna use that चमकीला. हाँ, चमकीला के बगैर तो ग्लैम लुक नहीं होने वाला for sure. मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं. ओके, तो यूजिंग इट ऑन माई आईलिड फॉर दैट ग्लो. आप लोगों को जल्दी दिखा देगा. होल्ड ऑन. ये देयर इट गोस. यस, ऑन बोथ ऑफ माई eyes I'm gonna use this little bit blending here and there. Ta-da. Yes, now it's turn for the nose. मेरी नाक बहुत मोटी है, छोटी है. So I'm gonna have to make it look snatch again, which is the trend. Normally मैं use नहीं करती, ठीक है? Only in occasion. So this is how I do. It's time for mascara, both the mascaras. Maybelline का ये वाला mascara is the best, which makes my eyelash go whoop. You saw that? Yes, on both my eyelashes. Looking good. So दूसरी वाली यूज़ करने वाली हूँ. I don't know why, for what reason, but yeah, this mascara is waterproof, so it's gonna help me not to drain out. Look. अभी ये चमकीला मेरे को लगा कि हो गया, but inner corner में तो यूज़ करना भूल गई थी, which gonna make my eyes look attractive. You saw that? Yes. इस तरह से आपको दिखना है. Again the lipstick. How can I forget? Look at this. It matches perfectly with my skin tone. This color is perfect.
So I'm gonna use it on my cheeks as well for that monochrome look, that summer glowy glam little tanned look. इससे नहीं होने वाला था. फिर से मैं मैक का ये ब्लश स्वीट चॉकलेट में यूज़ कर रही हूँ again. All over my cheeks and a little bit higher for that, again, the snatchy look. Yes. ऊपर की तरफ उसी तरह से. Yeah. Done, done, done. बाल खोल के आपको दिखाने वाली हूँ. 3, 2, 1, go. Ta-da! This is my finished look. Yes, guys. Showing my look. अभी कोई लेके जाता बाहर तो अच्छा रहता, बट ऐसा तो होने वाला नहीं है. तो फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ दाएं की तरफ बाएं की तरफ पूरी तरह से मेरा पूरा चेहरा. बाय बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. See you.